मेरे को चैट और दिखा देना ताकि मुझे पता चल जाए। सो यार एक बार चेक करना हियरिंग। Hello everyone, are you able to hear me? I hope all of you are able to hear me. Yes, I have already shared the PDF to Dr. Shibu. He will be sharing in the group, and whatever I'm going to write on the iPad towards the end of the session, you will be getting that also. Okay, so don't worry about that. And in the today's session, it is going to be a complete discussion of gynae. So today I'm going to take up the gynae session, and in tomorrow's class I will be taking up the obstetrics. Fine. So welcome you all to the NLC YouTube live channel, and I am Dr. Harmeet Goel. Presently I am working as a gynecologist in preventive oncology department of Rajiv Gandhi Cancer Institute and Research Center Rohini, and I have been taking the OBS and gynae classes since the Fmge exam started. So friends, in this session, although all those students who have been attending my sessions, they are almost familiar with my credentials. I have done my MBBS from Lady Hardinge Medical College, post graduation in OBS and gynae from VMMC Safdarjung Hospital, Delhi, and hospital management course from National Institute of Health and Family Welfare. Finished my senior residency from SDN Hospital, Shadra, and Metro Group of Hospitals, Noida. I am an Fmge as well as the postgraduate teaching faculty since 2003. So I am into teaching for last 20 years, presently working in the Rajiv Gandhi Cancer Institute, Rohini. So friends, without any further delay, I don't want to take up much of your time. I am starting my session with the questions, okay? So in this session, I have divided into 4 parts. Part number 1 is an MCQs where I have added up 2021 year Fmge exam questions as well as the PG exam questions, okay? Image based questions in part 2, instruments in part 3, and the single liners in part 4. Fine. Now, most important indication for surgery in case of uterine anomalies. It is a very, very important question from 2021. So I have specifically marked, okay? So please just pay attention to this session. 100% the questions will be covered up from today's session, okay? That I am damn sure about it. So you can keep on writing your answers in the chat box. My options are incidentally diagnosed anomaly, you are going to do surgery, recurrent abortions, dysmenorrhea, or menstrual disturbance, okay? So are you going to do surgery in which of the following? So I can read the correct answers. Dr. Ankit, Dr. Modit, Dr. Divya, Dr. Ramya, and Sunil,
plenty of people. So the correct answer to this question is recurrent abortions. Always remember, whenever there is a history of recurrent abortions or uterine anomalies leading to infertility, that is an indication for operating upon uterine anomalies. I repeat, if there is a history of recurrent abortions or if uterine anomalies are the cause of infertility, only then we operate upon. So this PDF I am going to share and you will get it as it is, whatever I am writing. Okay. Now my next question from you is, what is the most common uterine anomaly? Most common uterine anomaly that is causing recurrent abortions. So the answer is septate uterus. Most common uterine anomaly that is causing abortions is a septate uterus. And the next answer is bicornuate uterus. So the first answer you have to mark is a septate uterus and the next answer will be a bicornuate uterus. Okay. What is the investigation done to diagnose uterine anomalies? Okay, whenever I take up a question, I discuss all the related questions there and then. Okay, it's not I'm going question wise, but I'm going content wise. Okay, so investigation done to diagnose uterine anomalies. Nowadays, there is a facility for 3D ultrasound. Okay, and there is a facility for MRI. Previously, when the facility for 3D ultrasound was not available, MRI was done as the investigation of choice to diagnose Mullerian duct anomalies, but MRI was a costly investigation. So best non-invasive is 3D ultrasound. Okay. With HSG, also you can diagnose, but confirmatory test for Mullerian duct anomalies. Confirmatory test for Mullerian duct anomalies, or you can say the gold standard investigation for Mullerian duct anomalies, you have to mark your answer as hysteroscopy plus laparoscopy. Okay, because on HSG, the septate uterus and bicornuate uterus looks like the same. Okay, so how to differentiate? With a hysteroscopy, it will prove to be a gold standard for a septate uterus, and laparoscopy will be good for the bicornuate uterus. Why? Because with hysteroscopy, this is a hysteroscopy, this is the light, you can resect out the septum. Okay, so hysteroscopy will be confirmatory as well as it is treating the septate uterus, and laparoscopy will be confirmatory and treating the bicornuate uterus. What is the surgery for bicornuate uterus? Surgery for bicornuate uterus is metroplasty. You should be knowing the name of the surgery also. So it is called as metroplasty. Okay, Strassman's metroplasty. Okay, so I hope it is clear now. Mullerian duct anomalies is the second most common cause for second trimester abortion, first being the cervical incompetence. And the most common uterine anomaly that is causing the recurrent abortions or infertility is the septate uterus, and next is the bicornuate uterus. Investigations done to diagnose, it is 3D ultrasound or MRI. With an HSG, you can have an idea. But the confirmatory or gold standard remains hysteroscopy plus laparoscopy, because with that you can differentiate a septate uterus from bicornuate uterus. And the surgery for septate uterus is hysteroscopic guided resection of septum. Okay. And bicornuate uterus, it is Strassman's metroplasty. Yes. Okay. So I switch over to my next question.
and it is a question of FMG exam 2021. Okay, there was an image given and there were 4 hormonal levels: FSH, LH, estradiol and progesterone, and they have labeled it as it is peak A, peak B, peak C and peak D. And the question was, which of the peak is responsible for ovulation? What is your answer? Yes, I can see clearly some students have written the answer is peak C. So you know that LH peak occurs 10 to 12 hours before ovulation. LH peak occurs 10 to 12 hours before ovulation. Can you tell me? I will take up a second page also so that I can write most of the content. So you are revising gynae with me. So this will be shared to you for FMG June 2022. Okay. Now, which is the hormone responsible for LH surge? LH surge occurs 24 to 36 hours before ovulation. Which is a hormone that is causing LH surge? Please write down in the chat box. It is an interactive session. Which hormone is responsible for LH surge? Yes, it is an estradiol peak. What is the hormonal level for estradiol peak? Answer is 200 picograms per ml. If LH peak occurs, after that there is an LH surge and finally it is an LH peak which is responsible. Okay. Now coming back to the same question. Now this is again an important question. Wherever 2021 is written, please make it a point that it is FMG exam question. Okay, 2021 latest questions I'm discussing. Now you have to identify this image. This is an image of vulva showing a swelling in a 22-year-old female. You have to identify this swelling. Is it a cystocele? Is it a Gartner's duct? Is it a cervical polyp? Or it is a Bartholin cyst? So the correct answer is it is a Bartholin cyst. Correct answer is it is a Bartholin cyst. Okay. Number 1. Cystocele never presents like this. Cystocele means when there is a urinary bladder prolapsing into vagina. So it is seen outside, so it is not a cystocele. Gartner's cyst is a like congenital anomaly, or it is a remnant of Wolffian duct which is forming a cyst, and there is a vaginal rugosity on the Gartner's cyst. So Gartner's cyst also don't present like this. It is not a cervical polyp because cervical polyp cannot be visible like this. Cervical polyp is visual on per speculum examination. Okay, so Bartholin cyst occurs in anterior 2/3 and posterior 1/3 between labium minus and hymen. So this cyst enlarges whenever the secretions of the duct gets blocked. Okay, so Bartholin cyst you can do incision and drainage, but if there is a recurrent Bartholin cyst, then the treatment is marsupialization, and Bartholin abscess is incision and drainage. Okay, so I hope this is clear. Now what is the lining epithelium of Bartholin gland? Lining epithelium of Bartholin gland, so the answer is columnar. Lining epithelium of Bartholin gland, the answer is columnar. Okay, now you have to tell me the Bartholin gland
in the female is homologous with what structure in the males? Bartholin gland in the female is homologous with what structure in the males? No glands of skin is in the females. Yes, the answer I got it is Cooper's gland. This is an important question from FMG exam. Bartholin gland is homologous with Cooper's gland in the males, and prostate gland in the males is homologous with which structure in the females? This is again an important question. So answer is glands of skin. Answer is glands of skin. Fine. Next. So let me take up another important question of 2021 exam. Which is the most cost-effective screening test for cancer cervix screening? Cost-effective, friends. So this question is an overlap between PSM and gynae. So options are pap smear, HPV DNA testing, colposcopy, or VIA, visual inspection under acetic acid. Yes, I can see because plenty of answers are coming up, and at presently I'm working in oncology department of Rajiv Gandhi Cancer Institute, and since we are sitting in the bigger setup, that is a 500 bedded hospital, so we as a screening test is doing a pap smear, but they are writing cost effective screening method. So all of you, those who are writing VIA is the answer. कॉस्ट इफेक्टिव का सिंपल मतलब होता है कि हम कम्युनिटी को स्क्रीन करें with the help of the health worker. So please, when cost effective method is written, don't write pap smear. Pap smear तब हम करते हैं जब हम hospital setting में बैठे हैं. Okay, like I am sitting in a cancer institute and we are doing screening, or I am sitting in a Lady Hardinge Medical College and I am doing a particular screening in the people. Then I will be doing pap smear because I have a lab facility and I have the kits available. But when the PSM people, yes, I like the answer of Dr. Prahlad Patel. It is VIA over PAPS. That is the correct answer. So friends, it is clearly all over the screening test for cancer cervix dysplasia is a pap smear. Okay. And that is a secondary level of prevention. That is a secondary level of prevention. Remember, it's a PSM question. Okay. But when in the question it is asked cost effective screening test for cancer cervix, your answer is not pap smear. Your answer is VIA. Those students who are not understanding what is VIA, it is visual inspection under acetic acid. It is very cheap test. What is done is the cervix is painted with acetic acid and abnormal area is aceto-white. So the health worker refers this patient to the gynecologist or the higher center and further testing can be done. Okay, let me tell you, remember HPV DNA testing, this is also a screening test, and at our hospital or other hospitals, if the age of the female is above 30 years, we are doing PAPS test plus HPV DNA, and this has to be repeated every 5 yearly. So remember, HPV DNA testing is also a screening test. Okay, if I ask you students,
What is colposcopy for? Colposcopy is a confirmatory test for cancer cervix. Colposcopy is a confirmatory test for cancer cervix. And I am really surprised, in 2021 Fmge exam, they have asked what is the color of filter used in colposcopy. Students, I hope you are remembering one thing, that I am not starting with very basic questions, क्योंकि आपके level of exam का questions थोड़ा सा vary हो गया. It is just like PG level. Okay, so those questions which I have not discussed in my sessions, I am starting up with that. तो मैं presently 2021 June and December के questions discuss कर रही हूँ, so that it is for the benefit of everybody. The things which you don't know, if I keep on discussing about HPV, you already know about HPV. A16-18 is causing cancer. Okay, so I am not discussing that. I am adding those points first which you don't know. Some of you don't know. So color of the filter is green color. Remember, color of the filter used in colposcopy is a green color, and we apply 3 to 5% acetic acid, and then we visualize on colposcopy, or we can apply 0.3% Schiller's iodine and take the cervical biopsy. Okay, take the cervical biopsy. Fine. Yes, one more thing I want to add up. Okay, one more thing I want to add up. So I will keep on writing questions so that you understand this is important. Okay, now if there is obvious growth on cervix, what is your next line of management? If there is an obvious growth on cervix, what is your next line of management? Obvious growth on cervix, what is your next line of management? Your answer is sponge biopsy. Your answer is cervical punch biopsy. No, cone biopsy is the wrong answer. Please make it a correction, because this has been asked in FMGE exam. Obvious growth on cervix is always sponge biopsy. For, let me tell you, in 2021 FMG exam, there were 5 questions on cancer cervix, on colposcopy, on pap smear, on VIA, on punch biopsy, on staging and stage-wise treatment. Yes, I am explaining. For example, this is the cervix, and there is obvious growth you can see on per speculum examination. Will you use colposcope to take up the biopsy? No. I will take a punch biopsy forceps, and I will take up a punch biopsy of the tissue. So this is a cervical punch biopsy forceps, and you will take. I am discussing all important. This is all important. It is from FMG exam only. Shilpa, I am not discussing anything which is not been asked. ये 2021 एग्जाम में ही आया है, मैं वही डिस्कस कर रही हूँ. ठीक है, नेक्स्ट. Which of the following have a positive bar body? Again from FMG exam. Which of the following is a positive bar body? Turner syndrome, trisomy 21. Yes, I agree with Vipul answer. See, as a teacher, I know which is the latest question. And out of 600, everybody does not know what is the latest questions. Okay. I like the answers, those who are writing Klinefelter syndrome. Yes, yes. First of all, you have to understand what is a bar body. Bar body smear is taken from buccal smear. Bar body का मतलब क्या होता है? Bar body का मतलब होता है second X, presence of second X, and the smear is taken as buccal smear. ठीक है, buccal smear. ठीक है,
So all the girls attending my session, your karyotyping is 46XX. So all of you have, including me, one bar body because our ovaries are normally functioning. Okay, so all of us have one bar body because our karyotyping is 46XX. Fine. All the boys attending my session, your karyotype is 46XY. Okay, so in single line you don't have a second X, so there is no bar body present in boys. This is the simple way you can understand. Okay, now if I talk about Turner syndrome, friends, Turner syndrome is 45XO. So there is no bar body. Since second O is not there, so they have non-functioning ovaries. So all of you know about Turner syndrome. I don't want to waste up your time by asking again and again the questions which you already know. जो आपको already आते हैं बार बार मैं वो डिस्कस नहीं कर रही हूँ, एम्फोसाइज कर रही हूँ जो आपको नहीं आते हैं, बिकॉज आई वॉन्ट, अगर आपके 40 एमसीक्यूज आते हैं तो 40 में से 40 चाहिए मुझे सबके, ठीक है. नाउ आई टॉक अबाउट क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. Klinefelter syndrome is an abnormality where there is 47XXY. So यहाँ पे जो सेकेंड एक्स है इसकी वजह से बार बॉडी है, तो इसको हम बोलते हैं फॉल्स बार बॉडी बिकॉज मेल्स शुड नॉट हैव बार बॉडी. आप इसको सिंपल समझिए, बहुत डिटेल्स में जाएंगे तो हम एक ही क्वेश्चन डिस्कस करते रह जाएंगे, ठीक है. सो आंसर क्या है आपके एग्जाम के क्वेश्चन का? इट इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. Fine. Now, what is important features of Klinefelter syndrome? It is a cause of male infertility. It is a cause of male infertility. They are tall males. They have gynecomastia. They have hypogonadism and they have infertility. You can pay attention to what I am discussing. बिकॉज जो मैं लिख रही हूं ये सारा मैं आपको पीडीएफ में शेयर कर दूंगी, ठीक है. आई एम गोइंग टू शेयर टू डॉक्टर पारस और डॉक्टर शिबू एंड ही विल बी शेयरिंग. फाइन, चलो आगे चलते हैं. नेक्स्ट, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. व्हाई नॉट एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी? मैं यहां पे लिख देती हूँ कैरियोटाइप सबका. टर्नर इज 45XO, ट्राइजोमी 21, तो ऑलरेडी ट्राइजोमी आपको पता ही है. क्लाइनफेल्टर इज 47XXY, सो द आंसर इज क्लाइनफेल्टर. एंड्रोजन insensitivity syndrome, again the karyotype is 46XY. चलो नेक्स्ट करते हैं. I know this is a fixed question and all of you know the answer. A mother brings her 18-year-old girl to the gynae OPD. She has not attained menarche. Hormonal status are FSH and LH are normal. Breast examination is normal. Pubic hair and axillary hair are normal. And ultrasound shows absent uterus. There is a small blind vagina and karyotype is 46XX. सब कुछ तो उसने लिख के दे दिया. What is your answer? I can read and I like the answers. Those who are straight away writing Mullerian agenesis. Okay, so the answer to this question is Mullerian agenesis. Why Mullerian agenesis? Because here there is normal ovaries and ovarian functions are normal. That is why breast development is normal and external genitalia development is also a female. Now answer to my question. Okay, which is the hormone responsible for hair growth in the boys and the girls? Which is the hormone responsible? Write down.
Yes, I like Ansari's answer, Mamarosh answer. Okay, so the answer to this question is androgen. And I congratulate those because it is a NEET PG question 2020, which is a hormone responsible for hair growth. So the answer is androgen. Okay. Now, which is the hormone responsible for thelarchy? Thelarchy means the breast development. Thelarchy means the breast development. So, which is the hormone responsible for breast development? Yes, yes. The answer is estrogen. The answer is estrogen. Okay. So, the hormone responsible for the breast development is estrogen. Okay. Now you have to tell me in the boys, what are the hormones secreted by Sertoli cells? This is important question. And what is the hormone secreted by Leydig cells? What is the hormone secreted by Sertoli cells and what is the hormone secreted by Leydig cells? Hormone secreted by Sertoli cells in the boys is testosterone binding protein. Then they secrete inhibin, question asked in FMG, and they secrete Mullerian inhibiting substance which inhibits the development of Mullerian duct. And Leydig cells secrete testosterone. Out of them, this question was asked in MCI exam, and inhibin, this question was asked in MCI exam. So what are the hormones secreted by Sertoli cells in the boys and Leydig cells in the boys? So it is inhibin, testosterone binding protein and Mullerian inhibiting substance, and by Leydig cells it is testosterone. Okay, let's continue. A 25-year-old female attains a gynae OPD with secondary amenorrhea. Now the patient has presented with secondary amenorrhea and she has history of DNC done. Her FSH levels are 6 international units per liter. What is your diagnosis? It's from latest FMG exam question 2021. I hope you want me to discuss the latest questions of your exam. Do you want me to discuss in this pattern? Questions and related questions. Write down yes or no, so that I understand. Yes. Now got it? Now friends, this is a clear-cut history that after a DNC, if the patient is developing secondary amenorrhea and FSH levels are normal. FSH levels normal are, friends, 5 to 20 international units per liter. So FSH is normal. You will not write Sheehan syndrome. Okay. Premature ovarian failure, FSH levels are high. So again, that is not the answer. And it has nothing to do in pregnancy. So the answer to this question is Asherman syndrome. I again tell you how. Whenever there is a DNC done followed by secondary amenorrhea and normal FSH, DNC करा दिया, सेकेंडरी एमेनोरिया है, FSH नॉर्मल है, ठीक है, then your answer is always Asherman syndrome. Asherman syndrome has occurred
because of vigorous curettage performed by DNC. So there is formation of adhesions and obliteration of uterine cavity. ओके तो आपको क्या चीज देखनी है, डीएनसी की हिस्ट्री होनी चाहिए. ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है एफएमजी एग्जाम में. 2020 एफएमजी में आया, 2021 में आया, नीट पीजी में आया, एमसीआई में आया, आईएनआईसीईटी में आया, यानी कि एम्स में आया. तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. मेरे हिसाब से 2022 में भी दे दो ना, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स को आंसर आता है. दैट इज वाई वही क्वेश्चंस आने चाहिए जो सबको आते हैं. दैट इज व्हाट एमसीआई में सबको क्लियर करने दो ना यार. दैट इज व्हाट इज माय फंडा. ओके सो डीएनसी डन, एफएसएच नॉर्मल, secondary amenorrhea is Asherman. Now, what is the gold standard investigation in Asherman syndrome? Asherman syndrome you can diagnose on HSG, irregular filling defect. Then gold standard is hysteroscopy, because you can do hysteroscopic guided adhesiolysis. You can do hysteroscopic guided adhesiolysis. You can break the adhesions. Hysteroscopic guided adhesiolysis. You can break the adhesions. Okay. So till now, is it clear? Now, why the answer is not premature ovarian failure? Now, premature ovarian failure, it means ovarian failure occurring before the age of 40. Okay, so there is history of secondary amenorrhea, but in this case FSH levels are more than 40 international units and estradiol levels are less than 25 picograms per ml. So this is how you will write premature ovarian failure, and there is no DNC. And what is the treatment of premature ovarian failure? Treatment is you give estrogen plus progesterone to treat amenorrhea. Now, why this is not Sheehan syndrome? Because in Sheehan syndrome, the history written will be severe atonic PPH, and there will be failure to lactate, secondary amenorrhea, and decrease BMR, hypotension. So all this history is not written, so it is not Sheehan's. So I hope you got it how to differentiate. DNC, FSH normal, secondary amenorrhea, mark Asherman syndrome. Gold standard investigation, hysteroscopy. Treatment, adhesiolysis. Premature ovarian failure occurring in less than 40. And what is the hormonal profile in premature ovarian failure is this one. FSH more than 40 and estradiol less, because ovaries have stopped releasing the follicles. Okay, stopped releasing the ovulation. Fine. Next, this is again a new question for some of you, those who are not aware of the previous questions. क्वेश्चन क्या था? A 55-year-old post-menopausal lady attends the OBG clinic, gynae clinic, sorry, OBG नहीं, gynae clinic with history of chronic pelvic pain. ठीक है? And X-ray was done. X-ray was done and shown this image. ठीक है? और इस पेशेंट में आई थिंक देयर वाज सम मोर हिस्ट्री. ठीक है, बट ये रिकॉल क्वेश्चंस होते हैं. तो इसमें आपको दिख रहा है ये कैल्सिफाइड है, ये कैल्सिफाइड इमेज है.
अब ये कैल्सिफाइड इमेज क्या ब्लैडर स्टोन है? पहली बात, इतना बड़ा ब्लैडर स्टोन कभी नहीं होता और उसमें क्रॉनिक पेल्विक पेन नहीं होगा। ब्लैडर स्टोन होगा तो उसमें हिमेचूरिया की हिस्ट्री होगी। सो हिमेचूरिया की हिस्ट्री यहाँ पे नहीं लिखी है तो इट विल नॉट बी ब्लैडर स्टोन। पीआईडी में कभी इस तरह की कैल्सिफिकेशन नहीं होती एंड नीदर ओवेरियन मास प्रेजेंट्स लाइक दिस। सो दिस इज अ कैल्सिफाइड फाइब्रॉइड and this question was asked in 2020 MCI and they have repeated in 2021 MCI. So remember this is a calcified fibroid. ठीक है, हमें हर नंबर से मतलब है I want every question of yours to be correct. So this is a calcified fibroid. Now let us take up another latest question and I'm sure all of you will be very, very happy. 55-year-old female has cancer cervix stage 3B. What is your best management? Concurrent chemoradiation, radical hysterectomy followed by chemotherapy, radiotherapy, or radical hysterectomy with chemotherapy. So what is your answer? I have told every time whenever it is advanced cancer cervix, the answer is concurrent chemo radiation. Okay, the answer is concurrent chemo radiation. Friends, सीधा सीधा आप याद रखो, कैंसर सर्विक्स स्टेज 1A, stage 1B, stage 2A. The answer is surgery. ठीक है, कैंसर सर्विक्स रिमेंबर stage 1B3, stage 2A2, stage 2B, stage 3, stage 4. The answer is concurrent chemo radiation. At last moment, I don't want you to waste your time in mugging up the staging. आपको जितना याद है उतना करो, ठीक है, लेकिन याद रखना है 1B3 एक स्टेजिंग है जिसमें बल्कि ट्यूमर होता है. द ट्यूमर साइज इज मोर देन 4 सेंटीमीटर. जहां पे भी बल्कि ट्यूमर है वहां पे कंकरेंट कीमो रेडिएशन. ओके, now what is the radiosensitizer drug in cancer cervix? Radiosensitizer drug in cancer cervix. I hope every one of you know that cisplatin. Friends, staging पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं तो कैंसर सर्विक्स एंड एंडोमेट्रियम आपको पढ़ना है, ठीक है. And frankly speaking, in most of the hospital which is giving a cancer treatment, they use cisplatin. Okay, you have to know the side effects of the cisplatin drug. Cisplatin is used in like endometrial cancer also and ovarian cancer also, and it's a radiosensitizer drug in cancer cervix also. Okay, next. An obese female is diagnosed with PCOS. Obesity is diagnosed with polycystic ovarian disease. What would be the first line of management? Very obese female, she's been diagnosed with PCOD, and this is a 2020 PG question. What is your management? Are you going to put her on oral contraceptive pills, lifestyle modification, metformin, or spironolactone?
metformin or spironolactone? Yes, I can see everybody is writing the correct answers. Either your preparation is very good or all of you want to score full out of full in obs gynae subject. I'm really happy for you. Okay. So this you already know. Most common cause of hirsutism and menstrual disturbance in young girl. Hirsutism and menstrual disturbance, what will you mark your answer? Of course, you will mark PCOS, polycystic ovarian disease. And suppose if you are given, she is obese. Okay. So always remember, first step will be lifestyle modification. Lifestyle modification. All of you know lifestyle modification. She has to do exercise, she has to do brisk walking, she has to reduce the fat intake, increase green leafy vegetables. All this is the lifestyle modification. Okay. Always the hormone comes as the second step. Fine. Hormones is the second step. What will help in lifestyle modification? Basically, increase androgens in the female is causing hirsutism. And in hirsutism, she has acne, she has baldness, she has increased facial hair, okay, etc. Increase androgens is suppressing the ovarian function. So lifestyle modification is reducing the androgen levels and automatically the circulating androgens will improve. Okay. Next. In India, emergency contraception contains. In India, emergency contraception contains. कौन सा emergency contraception इंडिया में यूज होता है? Is it levonorgestrel 1.5 mg single dose, ulipristal 30 mg, mifepristone 600 mg or OCPs? Ethinyl estradiol or LNG is oral contraceptive pill. What is your answer? Yes. I like Dr. Deka's answer, Dr. Bhagat. Okay. Most of you are writing very correct. So the answer is LNG. Friends, I am not only preparing you for FMG, but I am giving you tough questions also. तो अगर कोई इधर उधर के questions भी आ जाएं, तो आप लोग सॉल्व कर पाए. ठीक है. So emergency contraception, every one of you know, is postcoital contraception. Postcoital contraception is hormonal, usually within 72 hours of unprotected coitus, or it is IUCD within 5 days of unprotected coitus. Remember, only copper T is emergency contraception. Mirena is not emergency contraception. ठीक है. हार्मोनल में LNG है जो कि प्रेफर्ड है, देन OCP है, देन इट इज मिफीप्रिस्टोन. अब एक यूलिप्रिस्टल भी आ गई है. सो इन इंडिया बेस्ट इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन यूज्ड इज लीवोनॉर्गेस्ट्रोल, मोस्ट कॉमनली यूज्ड. ठीक है. अदरवाइज बेस्ट ओवरऑल इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन इज कॉपर टी. ठीक है. यूलिप्रिस्टल इंडिया में इतना कॉमनली यूज नहीं करते हैं. यूलिप्रिस्टल क्या है? It is, what is ulipristal? Write down in the chat box. What is ulipristal? Ulipristal is, what is ulipristal? It is selective progesterone receptor modulator. ठीक है. ये within 5 days 30 mg single dose दे सकते हैं एज एन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन फाइब्रॉइड
uterus also. Okay. Now, since all of you, many of you are asking about a septate uterus and uterus didelphus. Okay. Septate uterus, uterus didelphus दो टाइप के होते हैं, where two Mullerian ducts, they form independent uterus and there can be two cervix and two vagina, that is bicornis and bipolis, or it can be single vagina. तो सेप्टेट यूट्रस में प्रेगनेंसी आउटकम पुअर रहता है. डाइडेल्फस में like pregnancy can occur uneventful, but malpresentations are common. If you have to apply IUCD, this is uterus didelphus. ठीक है. You can differentiate the two on 3D ultrasound or on MRI scan. Okay. And also confirmatory will be hysteroscopy plus laparoscopy. As far as pregnancy outcome is concerned, uterus didelphus में pregnancy हो सकती है, normal delivery हो सकती है, but septate uterus, unless until you treat, usually pregnancy outcome poor. ठीक है. So investigation done to differentiate a septate uterus from uterus didelphus, investigations में definitely HSG तो आता ही है, but other investigations are 3D ultrasound and MRI, and confirmatory will be hysteroscopy, laparoscopy. But if you ask कहाँ पे pregnancy outcome poor रहता है, तो वो septate uterus है. ठीक है. There is one more question which has been asked in 2021 exam, which Mullerian duct anomalies pregnancy outcome is uneventful? तो आंसर आएगा आपका आर्कुएट यूट्रस. आर्कुएट यूट्रस में यूजुअली इस टाइप का यूट्रस है. यहाँ पे थोड़ा सा डिप्रेशन होता है फंडस पे, बट इट इज नॉर्मल. सो हेयर प्रेगनेंसी अकर्स इजीली and mostly there are no complications. तो कौन सी Mullerian duct anomalies हैं जिसमें कोई complication नहीं है? तो आंसर है arcuate uterus. Which type of uterine anomalies the reproductive outcome is comparatively bad? So the answer is septate or bicornuate uterus. Now अब एक क्वेश्चन 2020 में, 2021 में और 2022 में आ रहा है, वो है यूनिकॉर्नुएट यूट्रस. यूनिकॉर्नुएट यूट्रस ऑन HSG. इसमें क्या होता है, एक ही कॉर्नू डेवलप होता है. ओके. देयर इज ओनली वन कॉर्नू विच इज डेवलपिंग. ओके. सो इट इज लीडिंग टू पुअर रिप्रोडक्टिव आउटकम, pregnancy related complications, preterm labor pains, and sometimes in the rudimentary cornu there can be ectopic pregnancy that can take place. Okay, quickly just to show you the unicornuate uterus, I'll just check it if I have an image. Let us quickly see unicornuate uterus. अगर मैं अपनी स्लाइड्स को स्क्रॉल करूंगी डालने के लिए, इससे बढ़िया मैं फटाफट से आपको आई कैन शो इट टू यू ऑन गूगल व्हेन आई हैव द कनेक्शन. तो आप देखो ये यूनिकॉर्नुएट यूट्रस है. इसमें एक ही कॉर्नू दिख रहा है, दूसरी साइड का कॉर्नू नहीं है. सो प्रेगनेंसी आउटकम यहाँ पे भी पुअर रहता है. इट कैन लीड टू इनफर्टिलिटी, इट कैन लीड टू प्रीटर्म लेबर पेन्स, इट कैन लीड टू IUGR, or there can be in another cornu, there can be an ectopic pregnancy which is at times difficult to deal. ठीक है. So इस टाइप की इमेज they have asked in AIMS PG as well as FMG exam. So unicornuate में इतना ही पूछते हैं, बहुत डिटेल्स in FMG exam they don't ask. Okay. Now let's come down to another. एक और याद रखने, अगर आपको classes of uterine anomalies है तो रिप्रोडक्टिव क्लासिफिकेशन होती है जिसमें 7 क्लासेस ऑफ Mullerian duct anomalies हैं. यू कैन रीड इट. ओके. नाउ दिस इज अगेन एन FMG एग्जाम क्वेश्चन. हार्मोनल प्रोफाइल इन अ मेनोपॉजल फीमेल.
hormonal profile in a menopausal female. ब्लॉक्ड isthmus की इमेज ऐसे नहीं होती डॉक्टर लीला, इट इज लिटिल बिट डिफरेंट. ओके, hormonal profile in a menopausal female, this is the favorite question. 2015 से ये क्वेश्चन लगातार आ रहा है. एवरी एग्जाम दे आर आस्किंग हार्मोनल प्रोफाइल इन अ मेनोपॉजल लेडी. इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर. ओनली डिफरेंट है, मेनोपॉज इज आफ्टर 40. ओके, सो करेक्ट आंसर क्या है इसमें? ए. करेक्ट आंसर इज ए. FSH LH is high and especially FSH is more than 40 international units per liter. ओके, आप फटाफट से मुझे बता दो एवरेज एज इन मेनोपॉज. व्हाट इज मीन एज फॉर मेनोपॉज वर्ल्ड वाइज? आई हैव ऑलरेडी आस्क्ड दिस क्वेश्चन बिफोर. दिस इज इंपॉर्टेंट MCQ. व्हाट इज द मीन एज फॉर मेनोपॉज? नो नो नो, ऑल ऑफ यू आर राइटिंग रॉन्ग. नहीं भैया नहीं. मैके, डॉक्टर पटेल is right. Answer is 51 years. इसको याद कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. मीन एज फॉर मेनोपॉज का मतलब हमेशा ही वर्ल्ड वाइज है. इंडिया में है 47. क्वेश्चन में इंडिया नहीं पूछ रहा वो, ठीक है? तो याद रखो मीन एज फॉर मेनोपॉज 51 लिखना है आपको, ठीक है? नेक्स्ट, 25-year-old female with her husband presents in infertility clinic. Semen analysis is normal and HSG shows distal tubal block and female has menorrhagia. Let me check how many of you can do it and let me tell you it is FMG exam question. तो you please don't challenge me कि आपने कहाँ से क्वेश्चन ढूंढ लिए हैं. ये तो मैं आपको लेटेस्ट क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ, 2003 या 5 के नहीं पढ़ा रही, ठीक है? जमाना चेंज हो गया, क्वेश्चन के आंसर्स चेंज हो गए हैं, ठीक है? पैटर्न चेंज हो गया है. तो भाई एक कपल है इनफर्टिलिटी क्लिनिक में है जिसमें कि सीमन एनालिसिस नॉर्मल है बट HSG शोज डिस्टल ट्यूबल ब्लॉक. डिस्टल ट्यूबल ब्लॉक का मतलब क्या है? HSG कराया और यहाँ की ट्यूब्स में ब्लॉक आया है. भाई FMG में डिस्टल ट्यूबल ब्लॉक बहुत कॉमनली पूछते हैं HSG में, ठीक है? डिस्टल ट्यूबल ब्लॉक और कॉर्नुअल ट्यूबल ब्लॉक, ठीक है? अब देखो मैं आपको फटाफट से ये बताती हूं कि जो HSG है, नॉर्मल HSG में यू हैव पुट इन अ डाई डाला इसमें. और कौन सा कैनुला होता है? लीश विल्किंसन. मैंने कुछ इमेजेस भी डाली हैं इंस्ट्रूमेंट्स की. तो प्लीज अलाउ मी टू डिस्कस कंप्लीट पेपर बिकॉज सिंगल लाइनर्स भी हैं इसमें, इमेजेस भी हैं, इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, क्वेश्चंस भी है. पूरा कंप्लीट पैकेज है आपके लिए, ठीक है? ठीक है, अब जल्दी से इसमें फटाफट देखो. लीश विल्किंसन कैनुला से हम डालते हैं डाई एंड ये नॉर्मल HSG इमेज है जिसमें कि पूरा फ्री स्पिल दिख रहा है, ठीक है? अब डिस्टल ट्यूबल ब्लॉक का मतलब क्या होता है? ये डिस्टल ट्यूबल ब्लॉक है. दिस इज अ प्रेजेंटेशन, डिस्टल ट्यूबल ब्लॉक. ये HSG की इमेज है. इसका मतलब क्या है? दिस इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ PID और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोसेल्पिंग्स. फाइन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोसेल्पिंग्स. एंड PID के कॉजेटिव एजेंट्स क्या हैं? गोनोकोकस, क्लमाइडिया, माइकोप्लाज्मा. गोनोकोकस, क्लमाइडिया, माइकोप्लाज्मा. तो ये डिस्टल ट्यूबल ब्लॉक है.
अब मैं आपको बताऊं जेनिटल टीबी में क्या प्रेजेंटेशन होता है। जेनिटल टीबी में यूजुअली कॉर्नुअल ब्लॉक, जिसको बोलते हैं बायलैटरल प्रॉक्सिमल ट्यूबल ब्लॉक, इसको बोलते हैं कॉर्नुअल ब्लॉक। ये है जेनिटल टीबी, ठीक है। या फिर जेनिटल टीबी में क्या होता है, बीडेड अपीयरेंस ऑफ फेलोपियन ट्यूब होती है, बीडेड अपीयरेंस या फिर लेड पाइप अपीयरेंस। अब क्वेश्चन में ना तो वो बीडेड अपीयरेंस बोल रहा है, ना ही लेड पाइप अपीयरेंस बोल रहा है, एंड ना ही कॉर्नुअल ब्लॉक बोल रहा है। जब ये तीनों बोल ही नहीं रहा है तो जेनिटल टीबी तो आपका हट गया ऑप्शंस में से। सो इट इज नॉट ट्यूबल स्पाज्म, क्योंकि ट्यूबल स्पाज्म का मतलब होता है कॉर्नुअल ब्लॉक, ना ही ये जेनिटल टीबी है। जेनिटल टीबी यूजुअली डिस्टल ब्लॉक नहीं करता, पीआईडी कॉजेज डिस्टल ब्लॉक, ना ही ये ट्यूबल पॉलिप है। सो दिस इज क्लियर कट प्रेजेंटेशन ऑफ पीआईडी। पीआईडी का मतलब है पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज, जिसको कि सेल्फिंजाइटिस बोलते हैं। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पीआईडी? पीआईडी का मतलब होता है असेंडिंग इन्फेक्शन। पीआईडी मीन्स असेंडिंग इन्फेक्शन, और ये ज्यादातर पीआईडी एसटीडीज होते हैं। सो इन्फेक्शन अकरिंग टू द यूट्रस, दिस इज कॉल्ड एज एंडोमेट्राइटिस। Infection spreading to the tubes is called as salpingitis. Infection occurring to the ovaries is called as oophorytis. So when this becomes entangled in a complex, it is called as distal tubal block. Okay, it is called as distal tubal block. So your answer is salpingitis. Okay, got it? Now, 25-year-old female, I think it's again by mistake again typed, so leave this question. Now, 30-year-old female using a copperty, and she came with 8 weeks amenorrhea, copperty in situ. On examination, your thread is visible. This was asked in 2018 Fmge. What is your next management? Remove copperty and give her a choice of MTP, or remove copperty as it is teratogenic, ask her to continue the pregnancy, or remove copperty after the delivery. What is your answer? What is your answer? So the correct answer to this question is you have to remove copperty and give her a choice of MTP. It's not that copperty is teratogenic, that is why you're removing it. No, copperty teratogenic effect kabhi nahi karta hai, but copperty is a source of infection to the uterus and to the baby. So that is why copperty has to be removed if the thread is visible, and patient should be given a choice of contraception. Patient should be given a choice of MTP. Okay. So I hope this is clear. Now, a 15-year-old female presents with primary amenorrhea. Her height is 132 centimeters. Okay. And there is no breast development, chest is shield-like and congenital webbing. If the thread is not visible, Dr. N, then we remove the copperty at the time of delivery. Okay.
Now, I hope congenital webbing of neck, primary amenorrhea, all of you know it is a Turner syndrome. ठीक है, सो टर्नर सिंड्रोम के बारे में सबको ही आता है, तो मैं टर्नर सिंड्रोम अगेन एंड अगेन आई विल नॉट डिस्कस टू वेस्ट योर टाइम. I will rather discuss some more important MCQs which you don't know. Okay. Now, a woman presented in the gynae OPD with secondary amenorrhea with a history of curettage done for abortion. FSH is 7 milli international units per ml. This was Fmge 2020 and I think I have already discussed this question. So it is uterine synechia. It is uterine synechia. Uterine synechia means Asherman syndrome. Uterine synechia means Asherman syndrome. Now, next question. 18-year-old girl presented with primary amenorrhea, normal breast, axillary pubic hair are present and ultrasound shows absent uterus. It is again from one of the Fmge exam. And I think every one of you can mark Mullerian agenesis as your answer. If axillary pubic hair are absent, then it will be androgen insensitivity syndrome. Now, 18-year-old girl presented with primary amenorrhea, cyclically colicky pain, abdomen, most probable diagnosis. Primary amenorrhea, colicky pain. What is your answer? I think everybody can mark it is hematocolpos. Now, this is again Fmge exam question. A mother brings her 16-year-old girl with gynae complaints of not attaining menarche. She has cyclical pain. There is a mild swelling in the abdomen and there is a bluish membrane bulging. I hope the answer is correct, imperforate hymen. Although transverse vaginal septum, but with correlating with the image, it goes in favor of imperforate hymen. And what is the treatment for imperforate hymen? Is cruciate incision and drainage. Cruciate incision and drainage. Now, I have a new question for you, but since you're already giving me very good answers, 18-year-old girl presented with primary amenorrhea, normal breast development, axillary pubic hair are absent, ultrasound shows absent uterus, and there is bilateral inguinal hernia. What is important thing? Axillary pubic hair absent, primary amenorrhea, and bilateral inguinal hernia. What is this bilateral inguinal hernia? This is undescended testes. This is undescended testes and karyotype will be 46XY. So it is no other than androgen insensitivity syndrome. Okay, that is also called as testicular feminization syndrome. Now, hormone responsible for LH surge. This we have discussed. It is estrogen. Size of dominant follicle on transvaginal scan. 2012 Fmge exam question. Answer is 18 to 20 millimeters. Okay. Size of dominant follicle on transvaginal scan is 18 to 20 millimeters. Treatment of choice in a young female with primary dysmenorrhea. Primary dysmenorrhea, usually the answer is symptomatic. Dysmenorrhea, where there is no cause, so you have to give symptomatic. So usually we give mephtal spas, that is mefenamic acid plus dicyclomine, antispasmodic and analgesic. Fine. Now, all of the following regarding non-scalpel vasectomy are correct except, can you try this answer? This is the latest question on vasectomy. Usually they keep on asking about tubectomy. Now they have started asking about vasectomy. Non-scalpel vasectomy को बोलते क्या है? NSVT. And what is the failure rate of vasectomy?
0.15 per 100 women year. Okay, so sexual function following healing is rarely affected. This is true. Sexual function कभी affected नहीं होता. They can have coitus, there is no problem. Hematoma occurs in 5% cases. This is also a true statement. Sterility immediately after vasectomy, wrong. This is the answer. Immediately sterility नहीं होता. They have to use backup contraceptive method for 3 months. Immediately, can the male go for a coitus activity with the partner or the wife? No. Barrier contraceptive 3 months के लिए use करना पड़ता है, because some sperms can stay in the tract and failure can occur. Recanalization is possible. This is also true. So what is the answer to this question is C. Sterility immediately after vasectomy. ठीक है, sterility immediately after vasectomy. Those who are already on my Telegram group, please post the link here so that those who want to join they can join. मेरे अभी मोबाइल में नहीं खोल रखा है मैंने, तो इसीलिए मैं अभी पोस्ट नहीं कर सकती यहाँ पे. तो प्लीज किसी के पास मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है तो प्लीज यू कैन पेस्ट इट हियर. तो हैव यू गॉट दिस क्वेश्चन? दिस इज अ न्यू क्वेश्चन. नॉन स्कैल्पल वेसेक्टमी, sexual function is not affected. So wrong answer here is, you know, sterility immediately after vasectomy. ठीक है, contraceptive failure is 0.15 per 100 women year. Pearl index is used for contraceptive failure. ये सबको ऑलरेडी आता ही है. 32-year-old female comes 4 days after unprotected coitus. What will be the contraceptive advice you will give? 4 days after unprotected coitus, what will be the contraceptive? Answer is copper T. I think ये straight question है, हर एग्जाम में आता है. अगर 72 आवर्स के बाद है तो कॉपर टी ही लगाना है. ठीक है. Telegram group is by my name, Dr. Harmeet Goel. You can check it. ठीक है. Timing of IUCD insertion according to the latest guidelines. Timing of IUCD insertion according to the latest guidelines following delivery is within 10 minutes of placental delivery. आजकल लेटेस्ट गाइडलाइंस क्या है कि 10 मिनट्स के अंदर प्लेसेंटल डिलीवरी के बाद ही आप जो है कॉपर टी इंसर्शन कर सकते हैं, बट आफ्टर टेकिंग द कंसेंट. ठीक है. सो आईयूसीडी इंसर्शन वेरियस टाइप्स के हैं. दोज हु डोंट नो, लेट मी टेल यू. आईयूसीडी इंसर्शन आप एक तो करते हो पोस्ट प्लेसेंटल इंसर्शन. पोस्ट प्लेसेंटल इंसर्शन होता है विद इन 10 मिनट्स ऑफ डिलीवरी. एक होता है पोस्ट डिलीवरी इंसर्शन जो कि होता है विद इन 24 to 48 आवर्स ऑफ डिलीवरी. फिर होता है इंटरवल इंसर्शन, इंटरवल जो कि होता है आफ्टर 6 वीक्स ऑफ डिलीवरी. एक होता है इमीडिएटली आफ्टर एमटीपी और अबॉर्शन, इमीडिएटली. ठीक है. सो ये 4 तरह के कॉपर टी इंसर्शंस होते हैं. एक होता है पोस्ट प्लेसेंटल इंसर्शन विद इन 10 मिनट्स ऑफ डिलीवरी. एक होता है पोस्ट डिलीवरी विद इन 24 to 48 आवर्स ऑफ डिलीवरी बिफोर द पेशेंट इज डिस्चार्ज्ड. एक होता है इंटरवल आफ्टर 6 वीक्स ऑफ डिलीवरी. और एक होता है इमीडिएटली आफ्टर एमटीपी और अबॉर्शन, इमीडिएटली आफ्टर एमटीपी और अबॉर्शन. ठीक है. नेक्स्ट चलो. अ लेडी विथ इनफर्टिलिटी अंडरगोज लैप्रोस्कोपी फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट ऑफ पेल्विक एनाटॉमी. ठीक है. लैप्रोस्कोपी कराया एक पेशेंट ने,
क्रोमोट्यूबेशन करा है उसमें। क्रोमोट्यूबेशन का मतलब क्या है? वी आर इंजेक्टिंग अ डाई एंड वी आर पुटिंग अ लैप्रोस्कोप। क्रोमोट्यूबेशन में एक बार समझा देती हूँ। क्रोमोट्यूबेशन इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट। आपने यहां से डाई डाला, डाई गया फेलोपियन ट्यूब्स में एंड देयर इज अ ब्लू स्पिल ऑफ डाई। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द डाई? सीधा आंसर है मिथाइलिन ब्लू। एंड अनदर डॉक्टर इज पुटिंग अ लैप्रोस्कोप। इसको क्या बोलते हैं? लैप्रोस्कोपिक क्रोमोट्यूबेशन एंड इट इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट। सो व्हाट इज द डाई? मिथाइलिन ब्लू डाई। ठीक है। कॉल्पोस्कोपी फिल्टर कलर इज, आंसर इज ग्रीन कलर फिल्टर। और आपको बेसिकली क्या देखना है? एबनॉर्मल पैटर्न ऑफ ब्लड वेसल्स, जिसको क्या बोलते हैं? न्योवेस्कुलराइजेशन। न्योवेस्कुलराइजेशन का मतलब क्या है? देयर इज सम कैंसर डेवलपिंग, न्योवेस्कुलराइजेशन, एंड यू चेक पंक्टेट पैटर्न एंड यू चेक मोजेक पैटर्न। ये जो पैटर्न्स हैं ये कार्सिनोमेटस पैटर्न है कॉल्पोस्कोपी में। पंक्टेट, मोजेक एंड न्यूवेस्कुलराइजेशन। ठीक है, पंक्टेट, मोजेक एंड न्यूवेस्कुलराइजेशन। तो एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स देखना है आपको बेसिकली। ठीक है ना। कॉन्ट्रासेप्टिव विद मैक्सिमम फेलियर रेट, ये 2019 एफएमजी एग्जाम का क्वेश्चन है। व्हाट इज द कॉन्ट्रासेप्टिव विद अ मैक्सिमम फेलियर रेट? इस क्वेश्चन के हिसाब से बताएंगे आप मुझे किसका मैक्सिमम कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर रेट है। तो मैं आपको इसमें आंसर लिख के दे देती हूं। स्पर्मिसाइडल एजेंट का कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर है 30 पर 100 women ईयर। कॉन्डम्स का है 2 to 10, ओसीपी का है 0.1, कॉपर टी का है 388, का है 0.6। सो सबसे ज्यादा फेलियर रेट किसका आ रहा है इसमें से? स्पर्मिसाइडल एजेंट इफ यूज्ड अलोन। ठीक है। नेक्स्ट, lady passes urine while coughing and laughing. This is an important FMG question 2021. Lady passes urine while coughing and laughing. क्या चीज होती है ये? स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। और किसका फीचर है ये? जेनिटल प्रोलैप्स। कौन सा चैप्टर है ये? जेनिटल प्रोलैप्स। तो किस चैप्टर में पढ़ोगे ये? जेनिटल प्रोलैप्स। भाई कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं एफएमजी में भी जेनिटल प्रोलैप्स पे। ठीक है। नेक्स्ट, लोकेशन ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड ओपनिंग। हमेशा याद रखना है बार्थोलिन ग्लैंड आपको कभी भी वेजाइना में नहीं लिखना, हमेशा वल्वा आएगा आंसर। ठीक है। डोंट राइट वेजाइना एज योर आंसर विल बी रॉन्ग। नॉन स्कैल्पल का मतलब है वेसेक्टमी में एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जिससे कि हम वास डिफरेंस को पकड़ते हैं, वी कट इट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नॉन स्कैल्पल वेसेक्टमी और नो स्टिच वेसेक्टमी। ठीक है, स्कैल्पल यूज भी नहीं करते और स्टिचेस भी नहीं लगाते। आप अपना एग्जाम पास करके व्हेन यू गो टू इंटर्नशिप, सर्जरी वाले आपको वेसेक्टमी सिखाते हैं, गायनी वाले आपको ट्यूबेक्टमी सिखाते हैं। इट डिपेंड्स हाउ मच यू आर इंटरेस्टेड। यूजुअली डॉक्टर दिव्या, रिकरेंट इम्परफोरेट हाइमन कुछ नहीं होता, एक बार में ही ये ट्रीटमेंट मिल जाता है। ठीक है, I am teaching everything in English only. All the content I have taught till now is in English only. I am not teaching anything in Hindi, so don't worry. Non-scalpel, Shilpa, I have already told you, non-scalpel का मतलब है scalpel is not used. There's a special instrument who is, like used to do vasectomy. You will learn in the clinicals. Dr. Shilpa, please don't keep on writing the same line again and again. It is a request from my side. So it is disturbing for other students also, na? Those who want to learn and they want me to discuss more and more content in this session. Okay? So it is a request. Now, drugs for medical abortion. Who is going to tell me? Yes, Dr. Singh. Yes. फटाफट बताओ, ड्रग्स फॉर मेडिकल अबॉर्शन। मिफेप्रिस्टोन,
क्लियर आंसर सुन लो, आजकल जो चल रहा है इंट्रावेजाइनल देते हैं, ये बेस्ट है। सो मिफिप्रिस्टोन 200 mg and misoprostol 800 micrograms after 48 hours. The class is till 9 o'clock. Okay, so mifepristone 200 mg and misoprostol 800 micrograms after 48 hours. Okay, so I hope you know the abortifacient drug. So mifepristone 200 mg oral is given. Okay, and what is mifepristone going to do? Mifepristone is acting as anti-progesterone. It inhibits the progesterone support. Fine. Then after 48 hours, you give tablet prostaglandin E1, which is misoprostol, 800 microgram vaginal. This is followed by abortion. After the abortion is done, you will get an ultrasound done to confirm all the products have expelled. There should not be any retained products. So, Dr. Gunjan, previously it was given orally, but effectivity nowadays they say if you can give vaginal tablets, that is very good. Okay, so the best results are obtained within 7 weeks of pregnancy. Remember, abortifacient drugs, the best results are obtained if it is within 7 weeks. I am not saying that you can't give oral. If your patient is not willing for a vaginal insertion, you can always give an oral tablets, but the best results are obtained if it is given by vaginal route. Number one, side effects are minimized, and number two, the site of action is in the uterus, so it will be more effective. Now, a patient underwent radiotherapy for cancer cervix. Which organ in the pelvis is most radiosensitive? See, why you're seeing so many questions? Because MCI exam is twice a year, then there's a NEET PG, and then there is an INI CET exam. तो important questions मैंने maximum FMG के डाले हैं, but other exam questions भी मैंने इसमें add कर दिए हैं. Okay, which I feel is important for FMG students, I have added up all those questions. Fine. Now, a patient underwent radiotherapy for cancer cervix. Which organ in the pelvis is most radiosensitive? Which organ is most radiosensitive? So the answer is ovary. हमेशा याद रखिए, ओवरी जो है मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन है, इसीलिए हम यंग फीमेल्स में कभी रेडियोथेरेपी नहीं देते, बिकॉज इट डिस्ट्रॉयज द ओवेरियन फंक्शन. Okay, that is why if there is a germ cell tumor like dysgerminoma occurring in a young girl, teenager girl, so we don't prefer giving radiotherapy, although we know that radiotherapy is the treatment for dysgerminoma, but we don't want to destroy the normal ovaries. Had it been a 70-year-old female for dysgerminoma, I will prefer radiotherapy, but not for young girls because it is very, very radio sensitive. I am talking about dysgerminoma. Okay, dysgerminoma we do surgery because it is occurring in young girl. Most common menopausal symptom. HRT and menopausal symptom is a topic जो normally हम regularly classes में discuss नहीं करते हैं, but this is important. ओवरऑल आपको ओवरी ही लिखना है इसमें आंसर, ठीक है, अनलेस अंटिल समबडी टेल्स यू. एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिमेटोलॉजी का, जिसमें कहते हैं कि विच इज द मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ब्लड सेल. प्लीज रेफर टू योर हिमेटोलॉजी फॉर दैट आंसर. आई लाइक डॉक्टर सोनियाज आंसर.
ठीक है, मुझे ऑस्टियोपोरोसिस आंसर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मोस्ट कॉमन मेनोपॉजल सिम्टम माय फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट, डियर बच्चों, स्टूडेंट, छोटे बच्चों, बड़े बच्चों, कभी भी ऑस्टियोपोरोसिस नहीं आएगा आंसर में। हमेशा मोस्ट कॉमन मेनोपॉजल सिम्टम इज वेजोमोटर सिम्टम्स। वेजोमोटर सिम्टम्स क्या होते हैं? हॉट फ्लैशेस, स्वेटिंग, पैल्पिटेशन। तो एक आंसर लिखना है तो हमेशा हॉट फ्लैशेस आएगा। हॉट फ्लैशेस का मतलब है वेजोमोटर सिम्टम्स। व्हाई देयर इज हॉट फ्लैशेस? बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन विड्रॉल। हॉट फ्लैशेस क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन विड्रॉल। सो रिमेंबर माय फ्रेंड्स, मोस्ट कॉमन मेनोपॉजल सिम्टम हमेशा आपको लिखना है वेजोमोटर symptom. If you want to be specific, then it is hot flashes भी बोलते हैं इसको, hot flashes भी बोलते हैं, ठीक है। What is the cause for vasomotor symptoms? It is estrogen withdrawal. Correct answer from the Novak textbook. The reference book is Novak Gynae. Okay, reference book is Novak's Gynae. The answer is estrogen withdrawal. And what is the treatment given for menopausal symptoms? It is estrogen which is given. Which estrogen is Premarin? 0.625 milligram daily. Okay. Then what is the first line drug for osteoporosis? What is the फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर ऑस्टियोपोरोसिस? फर्स्ट लाइन ड्रग क्या है ऑस्टियोपोरोसिस की? See, whatever is the institute telling us, I have already done topic wise. Topic wise मैं already पढ़ा चुकी हूँ. This is an extra extending session for the student. Yes, bisphosphonates is the correct answer. Bisphosphonates is the correct answer. Osteoporosis का first line treatment. No, Raloxifene is not the first line treatment. First line treatment में हमेशा bisphosphonate आएगा. No second thought about it. There is a challenge. क्योंकि मैं आपको रेफरेंस टेक्स्ट बुक, करेक्ट रेफरेंस बुक से पढ़ा रही हूं, और एल्ड्रोनेट जिन्होंने लिखा है वो भी बिस्फॉस्फोनेट की वैरायटी है, ठीक है। दैट इज ऑल्सो वेराइटी टाइप ऑफ बिस्फॉस्फोनेट। सो ओवरऑल जो पूछते हैं 2020 एग्जाम में पूछा है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर ऑस्टियोपोरोसिस, आंसर इज बिस्फॉस्फोनेट्स, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। सो दोज हु हैव एनी डाउट्स प्लीज मेक इट अ करेक्शन। नाउ स्पर्म मोटिलिटी एंड मैच्योरेशन टेक्स प्लेस. Sperm motility and maturation takes place in which part of the male genital tract? Fatavat, it is an important FMG exam question. Yes, it is epididymis. Please don't write seminiferous tubules. Spermatogenesis is occurring in seminiferous tubules, but sperm maturation, ठीक है, takes place in epididymis. Sperm motility and maturation takes place in epididymis. Okay. If friends, if there is azoospermia, that means no sperms in the semen. What is the investigation done? What is the investigation done to find out the cause? There is pituitary cause, there is testicular failure, there is vast difference. So pre-testicular azoospermia, testicular and post-testicular. What is the investigation done to find out the cause of azoospermia? क्या कॉज के लिए कौन सी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं हम? तो करेक्ट आंसर है इसका, हम FSH लेवल्स कराते हैं। अगर एक आंसर लिखना है, वैसे हम लोग क्या क्या कराते हैं? FSH, LH एंड टेस्टोस्टेरोन कराते हैं, ठीक है। वैसे ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं, ठीक है। सो FSH, LH एंड टेस्टोस्टेरोन. इफ वन आंसर टू मार्क, देन योर आंसर इज FSH, ठीक है।
then your answer is FSH. 25-year-old फीमेल. फ्रेंड्स जो मुझसे पूछ रहे हैं कि आप टॉपिक वाइज ले रहे हैं क्या, मैं तो पूरा गायनी पढ़ा रही हूँ यार. कैंसर सर्विक्स हो गया, कॉन्ट्रासेप्शन हो गया, डिसऑर्डर्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन हो गया, ओवेरियन चल रहा है, इनफर्टिलिटी चल रहा है, तो पूरा ही तो गायनी पढ़ा रही हूँ. ठीक है, मीनोपॉजल, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, सब कुछ ही बता रही हूँ मैं. नाउ 25-year-old फीमेल प्रेजेंटेड विद इनफर्टिलिटी, डिसमेनोरिया, मेनोरेजिया, पेनफुल कोइटस. यानी कि क्या क्या है? इनफर्टिलिटी, डिसमेनोरिया, मेनोरेजिया, डिस्परोनिया. क्लासिकल प्रेजेंटेशन, bilateral adnexal, uterus is normal and bilateral adnexa is tender. Yes, मुझे डॉक्टर जीएस का आंसर बड़ा अच्छा लगा. इग्नोर करो मैडम. यस, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बच्चे पढ़ के आए हैं और स्पेशली अटेंड कर रहे हैं उनको पता है कि ये सेशन कितना इंपॉर्टेंट है और हर चीज की एक टाइम लिमिट है. ठीक है, ऑलरेडी एनएलसी ने क्लास करवा ली है यार, रिवीजन सेशन करा लिया, ये बूस्ट अप चल रहा है आपके लिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव रहे. ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे क्लास लेने आई हूँ ताकि आपको फाइनल बूस्टिंग दे दूं. ठीक है, और जो क्वेश्चन हमने सेशंस में डिस्कस नहीं करे वो भी मैं इसमें ऐड कर दूं. ठीक है, एंडोमेट्रियोसिस, वेरी करेक्ट. जो एंडोमेट्रियोसिस दिख रहे हैं सीधा सीधा आंसर है, इसमें कुछ देखना ही नहीं है. ठीक है, सो इवन डिफरेंशियल का कोई मतलब ही नहीं है. ठीक है, सो infertility, dysmenorrhea, dyspareunia, menorrhagia, young female, okay, normal uterus, tender adnexa, सीधा endometriosis मार्क करो ना यार. अब जल्दी से मुझे बता दो, what is a gold standard investigation for endometriosis? Gold standard investigation for endometriosis. क्या है gold standard investigation for endometriosis? What is the answer? Answer is laparoscopy, because it is confirmatory and it is treating also. So gold standard investigation for endometriosis is laparoscopy. What is the most common symptom of endometriosis? Will you mark menorrhagia? Will you mark pain? Will you mark dyspareunia? What is your answer? I like the answer dysmenorrhea, but I like the answer of Dr. CJS. Yes, yes, the answer, one line, it is pain, but if they specify what is the type of pain, the answer is congestive dysmenorrhea. Okay, so if single answer, it is pain, but you have to specify what type of pain. So the answer is congestive dysmenorrhea. Most common symptom of endometriosis is not infertility, not dyspareunia, it is dysmenorrhea. Next, an infertility couple comes to the OPD, normal HSG, semen analysis is azoospermia. What is the investigation done? I have already told you, it is FSH. Now, all of the following are done to reduce the blood loss during myomectomy, except this is going to be difficult, those who have not read the topic of fibroid. Can you tell me what is the answer of question number 40? I am discussing question number 40. What is your answer for question number 40? मायोमेक्टमी कर रहे हो और आपको ब्लड लॉस नहीं चाहिए तो आप क्या करोगे? वेजो कंस्ट्रिक्टर यूज करोगे, ट्रू. हाइपोटेंसिव एनेस्थीसिया यूज करोगे, ट्रू, सो दैट द ब्लड लॉस इज मिनिमाइज्ड. आर यू गोइंग टू गिव GnRH analogs बिफोर सर्जरी? ट्रू, बिकॉज दे श्रिंक द फाइब्रॉइड. एंड OCPs are not given because OCPs do not shrink the fibroid. आपको याद रखना है कि कौन से हॉर्मोन्स श्रिंक नहीं करते. Drugs that treat menorrhagia in fibroid patient. जो menorrhagia को ट्रीट करते हैं वो कौन सी ड्रग्स हैं? OCPs, प्रोजेस्ट्रॉन, मायरिन. ठीक है. ड्रग्स दैट रिड्यूस द साइज ऑफ फाइब्रॉइड, यानी कि
जो कि श्रिंक करते हैं फाइब्रॉइड को, वो कौन सी ड्रग्स हैं? आंसर इज डेनाजोल, यूलिप्रिस्टल, GnRH, एनालॉग्स। एनालॉग्स का मतलब होता है एगोनिस्ट एज वेल एज एंटागोनिस्ट। एंड लेट्राजोल, लेट्राजोल इज अरोमेटेज इनहिबिटर, ठीक है। एंड इवन RU486, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग डॉक्टर प्रियंका, यस RU486 ऑल्सो श्रिंक। तो ये सारी ड्रग्स श्रिंक करती हैं फाइब्रॉइड में। OCPs नेवर श्रिंक फाइब्रॉइड। OCPs जो है वो देखो डॉक्टर ठाकुर, डाइडेल्फस बाइकॉर्नुएट सेप्टेट यूट्रस, हम HSG पे बोलते हैं, हम क्लियरली देख लेते हैं बाइकॉर्नुएट में एंगल जो है ऑब्ट्यूस होता है, सेप्टेट में एक्यूट होता है, ठीक है। लेकिन कंफर्मेटरी इनकी या तो MRI है या 3D अल्ट्रासाउंड है या फिर हिस्ट्रोस्कोपी लैप्रोस्कोपी है, ठीक है। यस, लेट्रोजोल इज अ ड्रग, ये भी आपको याद रखना है अगर आपके पेशेंट में PCOD है। सो ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग कौन सी है आजकल? ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग है लेट्रोजोल। देन क्लोमिफेन सिट्रेट, ठीक है। लेट्रोजोल इज अरोमेटेज एंजाइम इनहिबिटर और इसकी डोज है 2.5 to 10 मिलीग्राम। क्लोमिफेन की डोज है 50 to 100 mg और ये कब देते हैं? Day 2 to Day 6 ऑफ द साइकिल। बट साइड इफेक्ट, लेट्रोजोल के साइड इफेक्ट्स लेस हैं कंपेयर टू क्लोमिफेन सिट्रेट। सो दैट इज व्हाई लेट्रोजोल इज प्रेफर्ड एज ओव्यूलेशन इंडक्शन एजेंट फॉर PCOD पेशेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग यूट्राइन एनोमलीज हैव बेस्ट रिप्रोडक्टिव आउटकम? मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं इसका आंसर है आर्कुएट यूट्रस। Premature menopause is menopause occurring in less than 40 years, ठीक है। Premature menopause is menopause occurring in less than 40 years. According to WHO guideline, first pap smear is to be taken in sexually active female, that is 21 years. वैसे हम लोग एक और चीज मैं आपको बता दूं, हम लोग हमेशा वैक्सीनेशन की बात करते रहते हैं, तो मैं यहाँ पे एक चीज आपको बता दूं, गार्डेसिल वैक्सीन जो अवेलेबल है, गार्डेसिल वैक्सीन लगती है 0, 2 and 6 months, जैसे एक आज लगाई फिर 2 months के बाद एंड 6 months के बाद। और ये कौन से ईयर में लगाते हैं? 9 to 26 years इन गर्ल्स एंड बॉयज। वैसे WHO ने रिकमेंड किया बॉयज में 9 to 15 years है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि PG में पूछ रहे हैं, एज ग्रुप फॉर गार्डेसिल वैक्सीन। सो 9 to 26 years. What are the cancers it is protecting against girls? Cancer cervix, vulval cancer and vaginal. Boys में कौन सा है? Penile cancer, anorectal cancer and oropharynx, ठीक है। So at Rajiv Gandhi Cancer Institute where I am working, and like we are giving this vaccine to the children, girls, and this is effective before the sexual activity starts, and there we are giving one dose at 3200. So like 10,000 में पूरे तीनों डोजेस लगती हैं इसकी। गार्डेसिल 9 भी है बट एकदम से इजीली अवेलेबल नहीं है और हम बहुत प्रमोट भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि अवेलेबिलिटी थोड़ा सा उसका प्रॉब्लम है। नोनावेलेंट वैक्सीन है और 1 डोज इज कॉस्टिंग 10,000 रुपीज। एज अ डॉक्टर्स यू शुड बी अवेयर, ठीक है। अभी आप पढ़ाई कर रहे हो एग्जाम पास करने के लिए, बट ऑल ऑफ यू हैव बिकम डॉक्टर्स टू ट्रीट योर पेशेंट्स, फाइन। सो दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग यू अवेयर ऑफ दिस, बिकॉज इट इज वेरी कॉमन, एनीबडी कैन आस्क यू कि डॉक्टर साहब मुझे वैक्सीन लगवाना है, तो आप छोटी छोटी चीजों के लिए गायनेकोलॉजिस्ट के पास मत भेजें, खुद ही वैक्सीन लगाएं अपने पेशेंट्स में। मंगवा सकते हैं और आप खुद लगा सकते हैं। इंट्रामस्कुलर है, डेल्टॉइड में लगाना है, ठीक है। So 9 to 26 years of age, this vaccine is to be done. भैया 9 to 45 नहीं है, डॉक्टर संदीप कहां से पढ़ लिया आपने? 9 to 26 है, ठीक है। Not predisposing factor for endometrial cancer, which is not a predisposing factor for endometrial cancer. Early menopause, obesity, hypertension, nulliparity.
आप लोग इतना खुश हो जाते हो क्वेश्चन देख के कि आप फटाफट मार्क कर देते हो. सो विच इज नॉट अ रिस्क फैक्टर? अर्ली मीनोपॉज इज प्रोटेक्टिव. जल्दी से मीनोपॉज हो गया, काम खत्म हो गया. सो अर्ली मीनोपॉज इज गोइंग टू बी प्रोटेक्टिव. रिस्क फैक्टर्स आर ओबेसिटी, hypertension, diabetes, nulliparity. ओवेरियन ट्यूमर सीन इन अ टीनेजर गर्ल. टीनेजर गर्ल में भाई कौन सा ट्यूमर होता है? जर्म सेल ट्यूमर्स ऑफ द ओवरी. जर्म सेल ट्यूमर्स ऑफ द ओवरी. ओवेरियन ट्यूमर कॉजिंग सूडोमिक्सोमा पेरिटोनियाई. क्वेश्चन फ्रॉम एफएमजी. सूडोमिक्सोमा पेरिटोनियाई कौन सा ओवेरियन ट्यूमर करता है? म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमा. And this is again the largest ovarian tumor. Tumor marker in yolk sac tumor. What is a tumor marker in yolk sac tumor? Yolk sac tumor is also called as endodermal sinus tumor. So it is alpha fetoproteins and antitrypsin. Most common karyotype of complete mole. कंप्लीट मोल में हमेशा ही डिप्लॉयड आएगा. ठीक है, कैरियोटाइप ऑफ कंप्लीट मोल इज डिप्लॉयड. नाउ फटाफट से हम कर रहे हैं क्विकली यहाँ पे, इसीलिए मैंने ये छोटे छोटे क्वेश्चंस लास्ट में डाले हैं. ट्रीटमेंट ऑफ एच मोल इन यंग पेशेंट इज ऑलवेज सक्शन इवैक्यूएशन. यू कैन कीप ऑन राइटिंग योर आंसर्स. Which of the following is not helpful in the diagnosis of ectopic pregnancy? Which is not helpful? This is an all India PG question. Which is not helpful in the diagnosis of ectopic pregnancy? Question number 51. Which is not helpful in the diagnosis of ectopic pregnancy? Answer is HSG. Hysterosalpingography has got no role. Pelvic examination क्या है? सॉरी, पर वेजाइनम एग्जामिनेशन, वो तो सबसे पहला क्लू है टुवर्ड्स डायग्नोसिस. ठीक है, देन अल्ट्रासाउंड इज द बेस्ट नॉन इन्वेजिव एंड देन सीरियल बीटा एचसीजी. एम्सल्स क्राइटेरिया 2020 अगस्त एफएमजी एग्जाम क्वेश्चन. एम्सल्स क्राइटेरिया किस में होता है भाई? आंसर है बैक्टीरियल वेजिनोसिस. एक और चीज बताएं, जिन पेशेंट्स में हम लोग पैप्समियर ले रहे हैं अपने हॉस्पिटल्स में, मैक्सिमम पेशेंट्स में बैक्टीरियल वेजिनोसिस निकलता है. जिसमें भी इंफेक्शन निकलता है बैक्टीरियल वेजिनोसिस. एंड रिमेंबर, बैक्टीरियल वेजिनोसिस इज नॉट एसटीडी. सो एम्सल्स क्राइटेरिया इज फॉर बैक्टीरियल वेजिनोसिस. Clue cells are seen in bacterial vaginosis. pH is more than 4.5 when this infection occurs. Then there is musty odor or fishy odor vaginal discharge. Musty odor and fishy odor vaginal discharge, and there is lack or deficiency of lactobacillus. Deficiency of lactobacillus, and there is a positive whiff test. Whiff test क्या है? When you take a vaginal discharge and you put KOH, there is a fishy smell. So all this is Amsel's criteria. All this is Amsel's criteria, and drug for bacterial vaginosis is metronidazole. Drug for bacterial vaginosis is metronidazole. So what is Amsel's criteria? Bacterial vaginosis, clue cells, pH more than 4.5, musty or fishy odor discharge, lack of lactobacilli, and whiff test. Fine. Diagnostic criteria for bacterial vaginosis are all except, I have just discussed, vaginal pH should be more than 4.5 because acidic pH inhibits the growth of pathogens. Most common symptom of endometriosis, it is dysmenorrhea. Okay. 45-year-old female presents with dysmenorrhea, menorrhagia, uterus is symmetrically enlarged and it is tender. 45, dysmenorrhea, menorrhagia, tender uterus. What is your diagnosis?
What is your diagnosis? Multiparous lady dysmenorrhea. Yes, the answer is adenomyosis. 45-year-old female dysmenorrhea, menorrhagia, tender enlarged uterus is adenomyosis. Useful investigation in VVF. What is VVF? Vesico-vaginal fistula. Most common cause of VVF in India is obstructed labor. ठीक है? So useful investigation is cystoscopy because we can see the site, size and number of fistula. A lady with abdominal mass was investigated and there were mucin secreting signet ring cells. Signet ring cells किसमें मिलते हैं भाई? जल्दी से बताओ आंसर. Signet ring cells. Where do you see signet ring cells? Answer Krukenberg. I like the answers B, 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 B. Very correct. It is Krukenberg. Tumor marker in choriocarcinoma. Simple question. Beta Hg. Female presented with thick white vaginal discharge and pruritus. Thick curdy white vaginal discharge, candida. Most common indication for hormonal replacement therapy is hot flushes. HRT means hormonal replacement therapy. Asymptomatic gonococcal carrier lies in endocervix. Asymptomatic gonococcal carrier lies in endocervix. IVF is ideal treatment for bilateral tubal block. IVF is an ideal treatment for bilateral tubal block. Okay? Tubes are blocked. So you are making the test tube babies and you are putting directly into the uterus. Earliest to rupture ectopic pregnancy. What is your answer? क्या आंसर मार्क करेंगे? अर्लीस्ट टू रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी. अर्लीस्ट टू रप्चर, जल्दी से कौन सी रप्चर हो जाती है? इस्थमिक रप्चर. एंड लेट टू रप्चर इज इंटरस्टिशियल. विच कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन वेट फिल्म. लेट मी आस्क, व्हाट इज योर आंसर? कौन सा ऑर्गेनिज्म हम डिटेक्ट नहीं कर सकते वेट फिल्म में? Which organism cannot be detected on wet film? Answer is chlamydia. Chlamydia के लिए फ्रेंड्स याद रखना है, हमेशा chlamydia कल्चर होते हैं जो कि मैकॉइस लाइंस में होते हैं. ठीक है? बाकी कैंडिडा, ट्राइकोमोनियासिस, बैक्टीरियल वेजिनोसिस यू कैन डिटेक्ट ऑन वेट फिल्म. ठीक है? क्लमाइडिया कभी वेट फिल्म में डिटेक्ट नहीं होता. क्लमाइडिया का हमेशा कल्चर बनाना पड़ता है. ठीक है? Treatment of red degeneration of fibroid. Friends, always conservative, analgesic. Treatment of red degeneration आपको याद रखना है, conservative. कोई सर्जरी नहीं करनी. Admit, bed rest, IV fluids and painkiller. Admit, IV fluids and painkiller. Now, most common site for vulval cancer is always labia majora. Most common site for vulval cancer is always labia majora. ठीक है? रेडियो सेंसिटाइजर ड्रग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सिस्प्लैटिन. Now, this is my gynae part 2. Let's go quickly. This question is from FMG. What is this karyotype? कैरियोटाइप को जल्दी से देखो और मुझे क्वेश्चन बताओ. इज इट डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और नूनन सिंड्रोम? कैरियोटाइप किसका है ये? आप देखो फटाफट से. ये ट्राइजोमी 21 है. ठीक है? कैरियोटाइप में क्या दिख रहा है? ट्राइजोमी 21. सो दिस इज FMG 2020 एग्जाम क्वेश्चन. ठीक है? FMG 2020 एग्जाम क्वेश्चन. चलो नेक्स्ट पे आओ जल्दी से.
ये एफएमजी एग्जाम क्वेश्चन है, 2020 एफएमजी एग्जाम। जल्दी बताओ, व्हाट इज दिस टाइप ऑफ स्टरलाइजेशन? कौन सा स्टरलाइजेशन है ये? व्हाट इज दिस टाइप ऑफ स्टरलाइजेशन? व्हाट डू यू सी हियर? दिस stainless steel coil is called as Assure. Assure is a permanent method of sterilization. It blocks the fallopian tube. So this is put by hysteroscopy. So this is hysteroscopic sterilization. पहले ये एम्स ने पूछा था क्वेश्चन, अब ये एफएमजी ने पूछा है। ठीक है, तो आप देख लो अपने क्वेश्चंस का लेवल क्या है। तुम लोग भी तो इंटेलिजेंट होते जा रहे हो ना, तो एग्जाम में भी थोड़े से क्वेश्चन तो डिफिकल्ट आएंगे। तुम भी तो स्मार्ट हो। सो जल्दी से बताओ, व्हाट इज दिस इमेज? फटाफट, व्हाट इज दिस इमेज यू कैन सी? क्या है ये इमेज? दिस इज स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी सर्विक्स और वेजाइना किसमें होता है? ट्राइकोमोनियासिस। ठीक है, स्ट्रॉबेरी स्पॉट्स इन वेजाइना, ट्राइकोमोनियासिस। चलो अब जल्दी से ये इंस्ट्रूमेंट बताओ। ये INI CET एग्जाम 2021 का है। ये इंस्ट्रूमेंट क्या है? जल्दी बताओ, व्हाट इज दिस इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर? क्या चीज है ये? ये है लिक्विड पैप्स लेने के लिए, और ये है आयर्स स्पैचुला। आयर्स स्पैचुला एंड साइटो ब्रश। ये हम लेते हैं कन्वेंशनल पैप। जब हम स्लाइड्स बनाते हैं तो कन्वेंशनल पैप, और लिक्विड पैप से हम ये स्पैचुला लेके एक हमारे पास सैंपल होता है, इसके अंदर डाल देते हैं। इसको लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी कहते हैं। तो हम लोग हॉस्पिटल में लिक्विड पैप यूज कर रहे हैं। जैसे हम राजीव गांधी की बात बताऊं, हॉस्पिटल में हम लिक्विड पैप कर रहे हैं, लेकिन हम जब कैंप्स में लेते हैं तो हम कन्वेंशनल पैप्स लेते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों में से बेटर कौन सा है? लिक्विड पैप्स ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये किस चीज के लिए इंस्ट्रूमेंट्स हैं? ये हैं पैप स्मीयर के लिए। ठीक है, दिस इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड फॉर टेकिंग द पैप स्मीयर। तो मैं आपको साथ साथ पीजी एग्जाम के क्वेश्चंस भी बता रही हूँ, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहे। ठीक है, नाउ दिस इज एम्स पीजी क्वेश्चन एंड आई हैव डेफिनेटली पुट अप दिस। ये एक ट्यूमर है, इट वाज ऑपरेटेड, एंड व्हाट डू यू सी इन दिस ट्यूमर? क्या दिख रहा है आपको ट्यूमर में? व्हाट डू यू सी? आई थिंक यू कैन सी टीथ, हेयर, bone. So what is this? This is mature teratoma, that is dermoid. आपके लिए म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमा पूछा था। ठीक है, so this is dermoid. Next, a pregnant female presented with amenorrhea spotting, pulse rate is 100. Ultrasound shows this. क्या चीज है ये? क्या दिख रहा है अल्ट्रासाउंड में? ये देखो, लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन पूछ रही हूं मैं आपसे, INI CET 2021। व्हाट डू यू फाइंड? मोलर प्रेगनेंसी। देखो तुम्हारा लेवल क्या है गायनी में। पीजी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, खुश हो जाओ। कम से कम कमेंट में कुछ अच्छा ही लिख दो यार। टीचर तुम्हें खुश कर रहा है, पीजी के लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा है यार, तुम एक अच्छा सा भी नहीं लिख रहे हो। ठीक है, सो दैट इज बिसाइड्स दिस स्नो storm appearance. It is an H molar pregnancy. Very good. I will be happy you will be able to solve mostly full out of full questions in gynae. You're solving the PG questions with me. INI CET के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो यार, अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए? एम्स के क्वेश्चन पूछ रहे हो, आग लगा दी, फोड़ दिया तुमने तो एग्जाम को। ठीक है, चलो आगे चलो। अब जल्दी से ये क्वेश्चन बता दो। देखो तुम तो नीट पीजी भी सॉल्व कर रहे हो, जल्दी बताओ क्या दिख रहा है इसमें? चलो जल्दी जल्दी बताओ, व्हाट इज दिस? व्हाट डू यू सी? अब आंसर लिखो यार, बहुत सारे मैंने देख लिए, स्माइली वगैरह, आग लगा दी, फोड़ दिया, सब कुछ देख लिया। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताओ। दिस इज हाइड्रोसेल्पिंग, सो इट इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ PID, जिसको डिस्टिल ट्यूबल ब्लॉक भी बोलते हैं। और इसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है?
बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है इनफर्टिलिटी का? आईवीएफ। पीआईडी का प्रेजेंटेशन है हाइड्रोसल्पिंग, हम लैप्रोस्कोपिकली इसको ट्रीट कर सकते हैं, बट बेस्ट है आईवीएफ करो, ठीक है। 30-year-old फीमेल कम्स विद रिकरेंट अबॉर्शन। भाई डॉक्टर शिल्पा यू वर आफ्टर माई लाइफ फॉर अ सेप्टेट यूट्रस। अब ये देखो, ये सेप्टेट यूट्रस है एचएसजी पे, ठीक है। तो व्हाट इज द नेक्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट? ये सेप्टेट ओब्लिक बाइकॉर्नुएट यूट्रस है, तो इसमें मैं क्या करूंगी? मैं लैप्रोहिस्ट्रो करूंगी। सो यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेप्टेट एंड बाइकॉर्नुएट यूट्रस। अब देखो, अगर आपको पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है रिकरेंट अबॉर्शंस में, डू यू वांट टू गेट एमआरआई डन? नो, इसमें कोई भी स्टूडेंट एमआरआई नहीं लिखेगा। क्यों? बिकॉज वी वांट टू treat our patient, we want to treat our patient, that is why I will do hysteroscopy and laparoscopy. yes, मजा आ गया यार, मुझे भी बड़ा मजा आ गया। इतने मस्त मस्त बच्चे हैं, बड़े पढ़े लिखे हो यार, तुम्हें तो मेरी क्लास की जरूरत ही नहीं है, तुम तो इतने बढ़िया बढ़िया आंसर लिख रहे हो, ठीक है। तो तुम तो पीजी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। एक हिस्ट्री है पेशेंट की रिकरेंट अबॉर्शन की, एचएसजी दे रखा है, एचएसजी में क्या दिख रहा है? ये वैसे देखा जाए तो ये सेप्टेट यूट्रस है, क्योंकि इसमें एंगल एक्यूट है, ये एंगल जो है ये एक्यूट है, तो ज्यादातर ये सेप्टेट यूट्रस की प्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो इसमें आप बेस्ट क्या करोगे? अगर इसमें कोई एमआरआई या 3D अल्ट्रासाउंड लिखेगा तो आंसर गलत हो जाएगा। आपने डायग्नोस कर लिया, अब क्या डायग्नोसिस ही बनाते रहोगे? पेशेंट को ट्रीटमेंट भी दोगे? यू शुड बी स्मार्ट। सो द आंसर इज लैप्रोहिस्ट्रो। तो मेरी क्लास में पीजी के भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अब गंद मत घोल के आना एग्जाम में कि गंदे गंदे आंसर्स लिख के आ गए हो, ठीक है। सो आई एम ऑलरेडी प्रिपेयरिंग यू बेस्ट। अब लेटेस्ट क्वेश्चन देख लो, ये वाला, ये एफएमजी में आया था और अभी ये INI-CET में भी आया है। क्या चीज दिख रही है? ये यूनिकॉर्नुएट यूट्रस है, ठीक है। एक कॉर्नु अलग पड़ा हुआ है, एक अलग पड़ा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज यूनिकॉर्नुएट यूट्रस। चलो, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ दिस इमेज जल्दी से बता दो। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर दिस इमेज, एब्सोल्यूट क्या है? पीआईडी। ये क्या चीज दिख रही है? कॉपर टी 380A, ठीक है। तो हमने ओवेरियन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, डिसऑर्डर्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन, वेसाइकोवेजाइनल फिस्टुला, वल्वल कैंसर, पीआईडी, एचआरटी, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, बेसिक लाइक इनफर्टिलिटी, देन बेसिक ऑफ एनाटॉमी, हम लोग सब इसमें डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब जल्दी से थर्ड पार्ट देखो, ये लास्ट पार्ट है मेरा, ठीक है। थर्ड पार्ट ये था इमेज बेस्ड क्वेश्चंस। अब फटाफट से सेकंड पार्ट था वो, थर्ड पार्ट ये देखो, ठीक है। और इसमें कुछ आई थिंक इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं फोर्थ पार्ट। तो मैंने आपकी हेल्प के लिए क्या करा है, देखो बच्चों, मैंने आपके लिए सिंगल लाइनर्स टाइप कर दिए हैं और इसमें से 100% आएगा। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करे जा रहे थे कि मैडम हमको सिंगल लाइनर कुछ ऐसा घोट के दे दो, घुट्टी पिला दो हमें, जिसमें से हमारे पेपर के क्वेश्चन आ जाएं। तो मैंने ये भी बना दिया, इसको पढ़ के चले जाना, पूरा का पूरा ये रामबाण है, इसमें से 100% क्वेश्चन आएंगे। जिसने कभी गायनी भी नहीं पढ़ा वो भी इसमें से पढ़ सकता है। सो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी एमेनोरिया, टर्नर सिंड्रोम, सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज। कल रात को बैठ बैठ के मैंने इसको रेड भी करा ताकि आपको दिख जाए अच्छे से, इससे ज्यादा और क्या कर सकती हूं मैं, ठीक है। सो 13-year-old गर्ल विद नो एक्सिलरी हेयर, प्यूबिक हेयर, ठीक है, प्राइमरी एमेनोरिया, ठीक है, सेकेंडरी एमेनोरिया, थिलार की हिर्सुटिज्म इन यंग गर्ल, पीसीओडी, ये तो आपको पढ़ना है। पीडीएफ दे तो दिया भाई, अब एनएलसी वालों से मांगते रहो। गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर एशरमैन सिंड्रोम, हिस्ट्रोस्कोपी, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर ओव्यूलेशन, टीवीएस, इन्वेस्टिगेशन फॉर प्रीमेच्योर मेनोपॉज, एफएसएच मोर देन 40, ठीक है। मैंने 1 डे रिवीजन लिया था तब बनाए थे, उसके बाद इसको मॉडिफाई कर दिया है। बच्चे मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं, अब मैंने कहा चलो ले लो यार, पढ़ लो, पास करो सबके सब। कॉन्ट्रासेप्शन ऑफ चॉइस ये भी लिख दिया मैंने। नोवा वेजाइनल रिंग, HPV 16-18 is the most common cause for cancer cervix.
Contraceptive method of choice, assure is a hysteroscopic sterilization. Okay, every line I have written for you. Obvious growth on cervix, the answer is sponge biopsy. At what year of age pap smear is to be taken? It is to be taken at 21 years of age in a sexually active female. Gardasil is a quadrivalent vaccine. Cervarix is a bivalent vaccine. ठीक है. Risk factors for endometrial cancers, nulliparity, infertility, ovarian tumors. Concurrent chemo radiation is for advanced cancers. Okay, this I have written. Then tumor and tumor markers I have written for you. Then histopathological findings like Samoma bodies are seen in serous tumors, Schiller Duval bodies are seen in yolk sac tumor, Kohl-Exner bodies are seen in granulosa cell tumor. Okay. Then snowstorm appearance is seen in H. molar pregnancy. Which trophoblastic tumor is chemo-resistant? Answer is placental site trophoblastic tumor. Cannonball appearance is seen in choriocarcinoma. Most common site of metastasis of choriocarcinoma is lungs. Okay. So best treatment for tubal block is IVF. Gold standard for ectopic pregnancy is laparoscopy. So these are around 70-75 points for you. You can ask from, like NLC, and this is my WhatsApp number. Send me a message. I will add you in my Telegram group and I will share it on the Telegram too. Fine. नाउ इंस्ट्रूमेंट, फटाफट इंस्ट्रूमेंट करो, इसके पीछे बच्चों ने जान खा रखी है, इंस्ट्रूमेंट बता दो. सो दिस इज चीटल्स फॉरसेप. चीटल फॉरसेप कहाँ यूज करते हैं? टू लिफ्ट एनी इंस्ट्रूमेंट. कहीं पे भी हमें कोई ट्रॉली खोलनी है, कोई गॉस पीस निकालना है, ड्रम में से कोई इंस्ट्रूमेंट निकालना है, तो हम चीटल्स फॉरसेप यूज करते हैं. चीटल फॉरसेप की शेप देख लो ध्यान से. ठीक है. अब ये देखो एलिस टिश्यू फॉरसेप, इसमें टीथ होते हैं. जल्दी जल्दी देखो फटाफट से. आई एम जस्ट एंडिंग अप द सेशन. दिस इज एलिस टिश्यू फॉरसेप जो कि टफ स्ट्रक्चर्स को होल्ड करते हैं. ठीक है. टफ स्ट्रक्चर्स क्या है? जैसे कि रेक्टस शीथ वगैरह है, तो हम एलिस टिश्यू फॉरसेप्स यूज करते हैं. ये क्या है? ये ओवम फॉरसेप्स है. ओवम फॉरसेप्स कहाँ यूज करते हैं हम? जब भी हम डीएनई कर रहे हैं, डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन. सो वी आर रिमूविंग द प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन. एक और चीज इसमें याद रखनी है, इसमें कोई लॉक नहीं होता. तो आप इंस्ट्रूमेंट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इट डज नॉट हैव एनी लॉक. ये लेटेस्ट एक क्वेश्चन आया एग्जाम में ओवम फॉरसेप्स पे. ठीक है. दिस इज बैबकॉक्स फॉरसेप 2020 एफएमजी एग्जाम क्वेश्चन. ये कहाँ पे यूज होता है? ट्यूबल लाइगेशन. जब आप ट्यूबेक्टमी कर रहे हो, यू आर होल्डिंग द फेलोपियन ट्यूब्स. ठीक है. दिस इज द बैबकॉक्स फॉरसेप्स. अब ये क्या चीज है? ये यूट्राइन साउंड. यूट्राइन साउंड में हमेशा मार्किंग लिखी होती है कि हमारे को यूट्राइन साइज देखना होता है. तो ज्यादातर हम जब भी कोई प्रोसीजर करते हैं यूट्रस में, तो हमें यूट्रो सर्वाइकल लेंथ देखनी होती है. यूट्रो सर्वाइकल लेंथ कितनी है? तो हम पहले यूट्राइन साउंड डालते हैं टू चेक द यूट्रो सर्वाइकल लेंथ, देन वी डू द प्रोसीजर. जैसे कि हमें कॉपर्टी इंसर्शन करना है, सो कॉपर्टी इंसर्शन करना है तो हमें यूट्रो सर्वाइकल लेंथ चेक करनी है. ठीक है. नेक्स्ट, ये क्या है? क्यूरेट. ये अभी अभी 2021 पीजी एग्जाम में पूछा है. व्हाट इज दिस इंस्ट्रूमेंट? दिस इज क्यूरेट. क्यूरेट किस लिए यूज होता है? डीएनसी के लिए. हमें कोई भी सैंपल यूट्रस में से लेना है तो हम ये क्यूरेट यूज करते हैं, और इसको हम एमटीपी में भी यूज करते हैं, डीएनसी में यूज करते हैं, हम एमटीपी में यूज करते हैं. एंडोमेट्रियल सैंपलिंग लेनी है हमको, यूट्राइन कैंसर के लिए देखना है, तो हम ये यूज कर सकते हैं. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. ऑल द बेस्ट.
चला ही रही थी, I don't know. Okay, because I was just continuing and I just want to end up. ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट्स एक बार मैं फिर से बोलूंगी. दिस इज अ डॉइंस रिट्रैक्टर and there is a question on the instruments also, and people were willing to see this instrument. So Doyne's retractor है to retract the bladder. Usually in abdominal surgeries, when we want to retract the urinary bladder, so Doyne's retractor हम use करते हैं so that when we are doing a surgery on uterus like cesarean section or hysterectomy, we should not cause injury to the bladder. Then Doyne's retractor use करते हैं. This is episiotomy scissors. एपिजियोटमी हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है, इन ऑब्स. कल हम लोग पूरा ऑब्स रिवाइज करेंगे. आज मैंने आपको पूरा गायनी रिवाइज करा दिया है, ठीक है. ये कार्मन्स कैन्युला है, कभी कभी इमेज में भी पूछ लेते हैं. दिस इज टू परफॉर्म एमटीपी, ठीक है. या फिर हमको कोई यूट्राइन सैंपल लेना है. सूडो हार्मोफ्रोडाइट जैसे कि like congenital adrenal hyperplasia is female pseudohermaphrodite, and androgen insensitivity syndrome is male pseudohermaphrodite. Sphere syndrome, these are basically the questions or topics which is covered in PG, and since this is a revision session for FMG and we have to quickly revise the whole content, so it will be difficult for me to discuss in short time. Okay, tomorrow also 7 p.m. same time. ठीक है. This is a uterine manipulator. This is done when you're doing a tubal ligation. You want to elevate the uterus. This is green armitage forceps. Uterine angles पे लगाते हैं. मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आप NLC ग्रुप में है, मैं वहां पे लिंक डाल दूंगी. टेलीग्राम ग्रुप है, वो है डॉक्टर हरमीत गोयल के नाम से ये टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है. You can follow me on YouTube channel, on Instagram, on Telegram, on Facebook, ठीक है. तो मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो आई हैव शेयर्ड. तो कहीं पे भी आप मुझे रिक्वेस्ट भेजें, मैं आपको टेलीग्राम लिंक भेज दूंगी. आप मुझे मैसेंजर पे कनेक्ट कर सकते हो, फेसबुक पे कनेक्ट कर सकते हो, यूट्यूब पे कर सकते हो, टेलीग्राम पे कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, या डॉक्टर पारस और डॉक्टर शिवू फ्रॉम NLC, उनको पकड़ो, उनसे ले लो आप लिंक, ठीक है. So guys and girls, all the best, and it was really a lovely session interacting with you, and huge number, more than 600 plus, really very well, overwhelming, and it is even I loved teaching this session, and completely I've revised the gynae. एंड साथ में मैंने इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके इंस्ट्रूमेंट, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 2021 PG क्वेश्चंस, FMG क्वेश्चन सारे लेटेस्ट डाल दिए हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे बहुत डिमांड आ रही थी, मैडम प्लीज़ आप सिंगल लाइनर्स हमें कुछ ऐसा दे दो, घुट्टी घोट के दे दो जो कि हम पढ़ लें और उसमें से क्वेश्चन आ जाए. तो मैंने ये ऑलरेडी टाइप कर दिए हैं और अपडेट कर दिए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं. टीचर कंटेंट दे सकता है, लेना और पढ़ना आपका काम है, ठीक है. सो NLC ग्रुप, यू कॉन्टेक्ट देम, एंड ऑलरेडी मैंने ये PDF शेयर कर दिया. आपको कॉन्फिडेंस डेफिनेटली आ जाएगा यार, PG क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो यार, एग्जाम तो फोड़ ही दोगे तुम लोग. चलो कल मिलते हैं 7 PM. बाय बाय.